Question number 3, part 1. It is given you tan theta is equal to tan theta is equal to uh, tan theta plus sec theta is equal to L. sec theta is equal to L. So you can write here tan theta is equal to L minus sec theta. Right? Now taking a square both sides, taking a square it is given tan theta plus sec theta is equal to L. Prove sin theta is equal to what? It is written L square minus 1 upon plus 1. Yeah, L square minus 1 upon L square plus 1. L square plus 1. That can be done. Right, this is the solution question. Taking a square both sides. Taking a square both sides, so you get tan square theta is equal to L square theta plus sec square theta minus 2L sec theta. Getting? Now, and you can write here tan theta means sec square theta minus 1 is equal to L square plus sec square theta minus 2L sec theta. Now what we do, this sec square theta and sec square theta is cancelled. We bring it here. So this is 2L sine theta, sorry, 2L sec theta. 2L sec theta is equal to L square minus 1. So sec theta is equal to L square minus 1 upon 2L. Right? This is, you get this. Now, another equation is ये हो गया. Now how we get tan theta? How we get tan theta?
they are saying sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ठीक, so they are saying sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equal to 1. This is what? This is L. So sec theta minus tan theta is equal to 1. Sorry, 1. This L, this is L, na? It goes in denominator, it is L. Right? Now this is equation 2. This is equation 1. Now if we write it in this format, that sec theta plus tan theta is equal to L, or sec theta minus tan theta is equal to 1 upon L. Now दिस वॉज एडिंग था, यहाँ पे हमने ऐड किया था, नहीं यहाँ पे ऐड नहीं किया था नहीं, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 राइट, subtracting then what happens, minus plus minus, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 tan theta is equal to L minus 1 upon L. मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, ये L स्क्वायर है ना, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, तो ये प्लस होगा, और ये इधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये L स्क्वायर प्लस 2L ये होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, L आपने कॉमन लिया, ये हुआ L स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 tan theta. So tan theta is equal to L square minus 1 upon 2L. ये हो गया, राइट, ये साइन थीटा की वैल्यू, ये सेक थीटा की वैल्यू। अब अगर हम देखें तो tan थीटा into sec theta, right, is equal to how much? Tan theta is
L square अब अगर आप देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो और cos थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। दिस sec गोज अप, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec theta. You bring this here, so tan theta upon sec theta is equal to sin theta. You get it? Now sin theta is equal to tan theta. What is tan theta? L square minus 1 upon 2L upon sec theta L square plus 1 upon 2L. Thick. So this 2L and 2L is cancel out. So how much you get? You are getting how much? You are getting sin square sin theta is equal to L square minus 1 upon L square plus 1. Hence, proof. You done this? Are you getting me or not? We find from here sec theta's value. इधर sec नहीं होगा, sin होगा। मेरे हिसाब से साइन तभी ये हो सकता है। अगर sec theta होगा then this will be the answer. Only in case of sin theta then answer will be like this. You properly make a note of it कि this is way how we solve it, right? We get the value of sin theta, then we go for this and this is the हमने जनरल फार्मूला लगाया, जो आइडेंटिटी है जनरल आइडेंटिटी यूज की, दिस इज व्हाट, दिस इज जनरल आइडेंटिटी, जनरल आइडेंटिटी को यूज किया एंड वी गेट दिस
and then we get to this here. This is equation 2, this is equation 1. We subtracted those, we get the value of 10. Now we get the value of 10, so we put the value 10 is equal to sin theta upon cos theta. Cos is equal to 1 upon sec theta, so it is sin theta upon sec theta. You bring it on the other side, then you will get the value of sin theta. Right? This is here. I hope you understand. Yes. Not. तो इसके बाद जो tan थीटा है और जो sec थीटा में हमने रखा था L स्क्वायर माइनस 1 L स्क्वायर प्लस वो रख देंगे. फिर get this ना. Yes. Chalo. Anyway, this was the question.